mitigate the impact of COVID-19 while ensuring that inflation remains within the target. While there were some differences in the quantum of reduction, the MPC voted by a 4-2 majority, that is by a 4:2 majority, to reduce the policy repo rate by 75 basis points to 4.4%. I repeat, the rate cut decision is 75 basis points, and accordingly the repo rate stands reduced from 5.15% to 4.4%. Simultaneously, the fixed rate reverse repo rate, which sets the floor of the liquidity adjustment facility, that is the LAF corridor, was reduced by 90 basis points. I repeat, 90 basis points to 4%, thus creating an asymmetrical corridor. The purpose of this measure relating to reverse repo is to make it relatively unattractive for banks to passively deposit funds with the Reserve Bank, and instead to use these funds for on-lending to the productive sectors of the economy. It may be recalled that during the month of March so far, the banks have been parking close to rupees 3 lakh crore on a daily average basis under the reverse repo, even as the growth of bank credit has been steadily slowing down. This decision and the advancement of the MPC has been warranted by the disruptive force of the coronavirus. It is intended to, 1, mitigate the negative effects of the virus, 2, to revive growth, and above all, number 3, to preserve financial stability. We are living through an extraordinary and unprecedented situation. Everything hinges on the depth of the COVID-19 outbreak, its spread and its duration. Clearly, a war effort has to be mounted and is being mounted to combat the virus, involving both conventional and unconventional measures in a continuously battle-ready mode. Life in the time of COVID-19 has been one of unprecedented loss and isolation. Yet, it is worthwhile to remember that tough times never last. Only tough people and tough institutions do. In the recent period, Reserve Bank has been in action on a daily basis with efforts to alleviate financial stress, build confidence, and keep the financial system sound and functioning. And we have taken a number of steps over the last 1 month or so since the conclusion of the last MPC meeting. In my statement, I have listed out the measures which have been taken. For the sake of time, I am not reading it out. Once the statement is uploaded, I think those who are interested can have a look at it. Let me assure that the Reserve Bank is at work and in mission mode, monitoring the evolving financial market and macroeconomic conditions, and calibrating its operations to meet any need for additional liquidity support, as well as to undertake other measures as may be warranted. It is our effort to ensure normal functioning of the markets, nurture the impulses of growth, and preserve, I repeat, and preserve financial stability. Incidentally, we have in RBI quarantined 150 members of our staff and service providers together with the IT facilitators and the entire IT facility as a part of our business continuity plan. The plan was prepared and executed in a matter of days. The MPC noted that global economic activity has come to a near standstill as COVID-19 related lockdowns and social distancing are imposed across a widening swath of affected countries. Expectations of a shallow recovery in 2020 from 2019's decade low in global growth have been dashed. The outlook is now heavily contingent upon the intensity, spread, and duration of the pandemic. There is a rising probability that large parts of the global economy will slip into recession. Turning to growth in India, the implied GDP growth of 4.7% in Q4 of 1920 in the second advance estimates of the National Statistics Office, which was released in February 2020,
within the annual estimate of 5% for the year as a whole is now at risk. As regards the outlook for 2021, apart from continuing resilience of agriculture and allied activities, most other sectors of the economy will be adversely impacted by the pandemic depending upon, I repeat, its intensity, spread and duration. We have to recognize that the government has taken timely and appropriate measures to contain these three factors, that is to contain intensity, spread and duration. And let us all cooperate with the measures announced by the government to deal with the problem, to prevent the spread of coronavirus, to contain it and win this war. If COVID-19 is prolonged and supply chain disruptions get accentuated, now these are risk factors which I am listing out. It all depends how we respond to the situation. I am just listing out the risk factors. Only time will tell how effectively we have acted as a nation and how effectively we have been able to contain the spread of coronavirus and how effectively we have been able to restrict its adverse impact on our growth. So if COVID-19 is prolonged and the supply chain disruptions get accentuated, the global slowdown could deepen with adverse implications for India. The slump in international crude prices could, however, provide some relief in the form of terms of trade gains. Downside risks to growth arise from the spread of COVID-19 and prolonged lockdowns. Upside growth impulses are expected to emanate from monetary, fiscal and other policy measures and the early containment of COVID-19. As regards inflation, the prints of January and February 2020 indicate that actual outcomes for the quarter are running 30 basis points above our earlier projections, reflecting the onion price shock. Looking ahead, food prices may soften even further under the beneficial effects of the record food grain and horticulture production, at least till the onset of the usual summer uptick. Furthermore, the collapse in the crude prices could work towards easing both fuel and core inflation pressures depending on the level of pass-through to the retail prices. As a consequence of COVID-19, aggregate demand may weaken and ease core inflation further. Heightened volatility in financial markets could also have a bearing on inflation. Given this heightened volatility, unprecedented uncertainty and extremely fluid state of affairs, projections of growth and inflation would be heavily contingent on, as I earlier said, the intensity, spread and duration of COVID-19. Precisely for these reasons, the MPC decided to refrain from giving out specific growth and inflation numbers because the situation is fast changing and the outlook is extremely uncertain. In fact, this kind of uncertain outlook has never been seen before. And as I mentioned earlier, I would again like to repeat that if we, all of us, every citizen, every person who lives in this country, if we follow the rules, if we follow the advices given by the government and other authorities, then as a country we should be able to win this war against COVID-19, in which case much of the worries that we have in our growth outlook would get considerably reduced. The MPC noted that macroeconomic risks both on the demand and supply side brought on by the pandemic could be severe. The need of the hour is to do whatever is necessary to shield the domestic economy from the pandemic. The Government of India has yesterday announced a number of measures which are expected to provide relief to various disadvantaged sections of the society. The MPC further noted that the Reserve Bank has taken several measures to inject substantial liquidity in the system. Nonetheless, the priority is to undertake strong and purposeful action in order to minimize the adverse macroeconomic impact of the pandemic. It also underscored the need for all stakeholders to fight against the pandemic. Banks and other financial institutions should do all that they can to keep the credit flowing to the economic agents which are facing financial stress on account of the isolation that the virus has imposed. Market participants should work with regulators like
the Reserve Bank and the SEBI to ensure the orderly functioning of markets in their role of price discovery and financial intermediation. Strong fiscal measures are of course critical to deal with the situation. To summarize, COVID-19 stalks the global economy and the outlook is highly uncertain and of course negative. Several nations are battling its exponential contagion. Countries are shutting down to prevent being sucked into a kind of black hole. Authorities all over the world are mobilizing on a massive scale to fight an invisible assassin. India has locked down economic activity and financial markets are under severe stress. Finance is the lifeline of the economy. Keeping it flowing is the paramount objective of the Reserve Bank of India at this point of time. The time has therefore now come for the Reserve Bank to unleash an array of instruments from its arsenal to staunch and mitigate the impact of COVID-19, revive growth and above all preserve financial stability. The aggregate action and stance of MPC provides a befitting launching pad. In turn, the configuration of initiatives unveiled in the statement on development and regulatory policies, which I am now going to spell out, amplify the MPC's decision and leverages on it as well. Accordingly, it is appropriate that the MPC's decision and the other actions which I am now going to elaborate upon should be regarded as a comprehensive package with force multipliers. The developmental and regulatory policies can broadly be delineated under 4 categories. First, measures to expand liquidity in the system sizably to ensure that financial markets and institutions are able to function not only in the face of COVID-related dislocations. 2, steps to reinforce monetary transmission so that bank credit flows on easier terms are sustained to all those who have been affected by the pandemic. 3, efforts to ease financial stress caused by COVID-19 disruptions by relaxing repayment pressures and improving access to working capital. And 4, endeavor to improve the functioning of markets in view of the high volatility experienced with the onset and spread of the pandemic. I would announce them in broadly 3 sections. The first section relates to liquidity measures. A multi-pronged approach comprising both targeted and system-wide liquidity provision has been adopted to ensure that COVID-related liquidity constraints are eased. The first announcement relates to targeted long-term repo operations, TLTRO. Let me elaborate further. Large sell-offs in the domestic equity, bond and forex markets have intensified redemption pressures. Liquidity premia on instruments such as corporate bonds, commercial papers and non-convertible and debentures have surged. Financial conditions for these instruments, which are used inter alia to access working capital in the face of the slowdown in bank credit, have also tightened. To mitigate the adverse effects on the economic activity leading to pressures on cash flows across sectors, the Reserve Bank will conduct auctions of targeted long-term repos of up to 3-year tenor of appropriate sizes for a total amount up to rupees 1 lakh crore at a floating rate linked to policy repo rate. Liquidity availed under the scheme by the banks has to be deployed in investment grade corporate bonds, commercial paper and non-convertible debentures over and above the outstanding level of their investments in these bonds as on March 25, 2020. Eligible instruments comprise both primary market issuance as well as secondary market purchases, including from mutual funds and non-banking finance companies. Investments made by the banks under this facility will be classified as held to maturity HTM even in excess of 25% of the total investment permitted to be included in HTM portfolio. Exposures under this facility.
हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं आरबी उपाध्याय, मार्केट एक्सपर्ट जो हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि आरबीआई के जो शशिकांत गवर्नर हैं, उनकी ओर से जो ये फैसला लिया गया है, इससे लोगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, जो हालात है जी कहीं ना कहीं कैश का फ्लो मार्केट में नहीं, जी और ज्यादातर आप संस्थान हैं या मजदूर हैं, जी लोग घर पर बैठे हुए हैं। तो ऐसे में जो परचेजिंग पावर है, आदमी की जो खरीदने की शक्ति है, वो कम हो जाती है। जी तो ये बैंक की जिम्मेदारी होती है कि मार्केट में कैश का फ्लो किस तरह बढ़ाया जाए, जी जिससे कि परचेजिंग पावर लोगों की बढ़े। आप देखेंगे जब इतना लंबा लॉकडाउन होता है तो जो लेबर है या स्पेशलिस्ट हैं, जी इन सबके पास पैसे की कमी हो जाती है, और जब कैश की कमी होगी, आगे ट्रांसफर नहीं होगा, तो मार्केट में जो एक ग्रोथ होनी चाहिए वो देखने को नहीं मिलेगी। जी तो सराहनीय कदम है बैंक का कि भी रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट दोनों में कमी की गई है, जी और कोशिश की गई है कि भी ज्यादा से ज्यादा लोन और मार्केट में ज्यादा से ज्यादा पैसा आए, जी जिससे इकोनॉमी की जो गति है वो बनी रहे। जी जी आरबी उपाध्याय जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि अगर मार्केट की ही बात की जाए तो इससे व्यापारियों पर किस तरह से असर पड़ सकता है, और अगर हम मार्केट की ही बात करें तो? देखिए, व्यापारियों पर आप देख रहे होंगे जी कि भी बंदी में वो अपना दुकान का किराया भी देगा। जी सरकार कह रही है कि भी जो एम्प्लॉय है उसकी सैलरी भी देगा, जी उसकी सैलरी नहीं काटी जाएगी। जी तो ओवरहेड एक्सपेंसेस जो उसके खर्चे हैं, जी वो खर्चे उसके कंटिन्यूअस खड़े हुए हैं, जी लेकिन स्टेब्लिश उसका बंद है, यानी इनकम उसके पास है नहीं, आएगी नहीं, जनरेट नहीं होगी इनकम। जी तो वो पैसा कहाँ से लाएगी? जी तो वहाँ सरकार की ड्यूटी बनती है, बैंक की ड्यूटी बनती है कि भाई ज्यादा से ज्यादा कैश किस तरीके से उस व्यक्ति या जो भी व्यापारी है उस पर पास पहुंचे, जी जिससे वो आगे एक्सपेंड करे और आगे वो मजदूर को सैलरी देगा या दूसरी जगह पैसा जमा कराएगा, वो जी पैसा मार्केट में घूमेगा। जी तो मार्केट में पैसा जब रोटेट होगा जी तभी इकोनॉमी को गति मिलेगी। अदरवाइज जिस तरीके से लॉकडाउन है, अगर इकोनॉमी का लॉकडाउन होता है तो आप देखेंगे बहुत सारे लोग दिक्कत में आ जाएंगे। तो वहाँ सरकार और बैंक की कोशिश यही है कि भी कम से कम रेट पर, कम से कम ब्याज पर भी किसी भी तरीके से मार्केट में जो भी व्यापारी है, आम आदमी है, उस तक नगदी पैसा पहुंचे। जी जी, उसी कड़ी में जो प्रयास है आरबीआई का, जी इसको देखा जाना चाहिए। जी आरबी उपाध्याय जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। आपको बता दें कि आरबीआई गवर्नर शशिकांत ने एक बड़ा फैसला लिया है। आपको बता दें, रेपो रेट में 0.75% की कटौती की गई है। कोरोना संकट के बीच आरबीआई का बड़ा फैसला आया है। आरबीआई गवर्नर शशिकांत दास का बड़ा फैसला। इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए एएनबी न्यूज के साथ। नमस्कार। इस वक्त की बड़ी खबर राजस्थान के भीलवाड़ा से आपको बता रहे हैं। कोरोना वायरस के 2 पॉजिटिव केस सामने आए हैं। आपको बता दें कि प्रदेश में 45 पहुंच चुकी है कोरोना पॉजिटिव की संख्या। चिकित्सक विभाग के एसीएस ने पुष्टि की है इस बात की। आपको बता दें कि कोरोना वायरस लगातार भारत में पैर पसारता जा रहा है। हालांकि सरकार इस वायरस से जूझने के लिए, निपटने के लिए तमाम कोशिशें कर रही है। लॉकडाउन किया गया है और कुछ राज्यों में कर्फ्यू भी लगाया गया है। आपको बता दें कि इसी बीच राजस्थान के भीलवाड़ा से 2 कोरोना वायरस के पॉजिटिव केस सामने आए हैं। प्रदेश में अब तक 45 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या पहुंच गई है। संदीप अग्रवाल संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि लॉकडाउन लगाया गया है, कई जगह पे कर्फ्यू भी लगाया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी कोरोना वायरस के जो ये मामले बढ़ते जा रहे हैं, उसको लेकर क्या अपडेट है? क्या लोग इसका अच्छे से पालन नहीं कर रहे हैं लॉकडाउन का?
जी, बता दूं आपकी जानकारी की, लॉकडाउन लगाया गया राजस्थान में। वैसे तो पिछले 2 दिनों से सख्ती बरती जा रही है लॉकडाउन को लेकर, और जो पुलिस महकमा है उसको साफ-साफ निर्देश दे दिए गए सरकार द्वारा कि कहीं भी कोताही नहीं बरती जाए, क्योंकि ये जो लॉकडाउन 21 दिन का बढ़ाया गया है उसको लेकर साफ निर्देशित है कि भाई ये 21 दिन कैसे भी निकाले। ये 21 दिन बहुत क्रिटिकल स्थिति पैदा करने वाले हो सकते हैं आमजन के लिए। ऐसे में राजस्थान सरकार ने पूरे राजस्थान में पुलिस महकमे को, प्रशासन को साफ निर्देश देते हैं कि लॉकडाउन के तहत कोई भी कोताही बर्दाश्त नहीं करें, और जो बकवासबाजी करता है या फिर उनसे बदतमीजी करने की कोशिश करता है उस पर तुरंत एक्शन लिया जाए और कानूनी कार्रवाई की जाए। जी संदीप, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि कुछ लोग लॉकडाउन के बावजूद भी बाहर निकल रहे हैं राशन पानी लेने के लिए, क्या उसके लिए सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से कोई व्यवस्था की गई है? जी बिल्कुल, बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि जो लोग राशन पानी के लेने के लिए बाहर निकल रहे हैं उनके लिए अल्टरनेट व्यवस्था की गई है। राशन पानी लेने के लिए करीब 2-2 मीटर की दूरी रखने के लिए उन्होंने घेरे बनाए रहे हैं, और चौक से उनको पोत रखा है जहाँ पे आदमी या युवक जो भी है आमजन वो खड़ा होकर ले सके, जिससे 2 मीटर की दूरी लगातार बनी रहे। वहाँ पर पुलिस प्रशासन मौजूद होता है। ऐसे में कोई भी लापरवाही या कोई भी भगदड़ मचने का कोई भी सवाल पैदा नहीं होता। जी संदीप अग्रवाल, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं राजस्थान के भीलवाड़ा से, जहां 2 पॉजिटिव केस सामने आए हैं कोरोना वायरस के, जिसकी जानकारी चिकित्सा विभाग के एसीएस ने दी है। आपको बता दें कि लगातार कोरोना वायरस के मामले भारत में बढ़ते ही जा रहे हैं और इस समय भारत कोरोना वायरस की 2nd स्टेज पर है। आपको बता दें प्रदेश में 45 कोरोना पॉजिटिव के मरीजों की संख्या पहुंच गई है राजस्थान में, जिसके चलते राजस्थान के भीलवाड़ा में 2 और नए मामले सामने आए हैं। सरकार की तरफ से हर एहतियात बरते जा रही हैं। कोरोना वायरस से रहें सावधान, वायरस से करें खुद का बचाव। दिन में कई बार हाथों को बार बार धोएं, हाथ साफ किए बिना अपने चेहरे पर ना लगाएं। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचें, खांसते